Assalamu alaikum, my very dear students. Cardiomyopathies. It's a group of diseases which primarily affect the heart disease. It is not the result of a congenital, acquired, valvular, hypertensive, coronary artery, or pericardial abnormality. So, in other words, if somebody is suffering from a mitral stenosis, aortic regurgitation, and his heart becomes dilated, is it cardiomyopathy? No, this is not cardiomyopathy. If somebody has got aortic regurgitation, dilated heart, this is congestive cardiac failure because of a dilated aortic regurgitation. So, cardiomyopathy is the diagnosis of exclusion. You must look for where there should be no congenital cause, there should be no acquired cause, valve should be normal, blood pressure should be normal, and the arteries should be normal. It should not be an ischemic episode. अगर एक बंदे को आज मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है और उसको हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मायोपैथी or pericardial abnormalities as well. So it's a group of diseases that primarily affect the heart diseases, and you have to exclude the other things which should not be a part of it. Etiological types: primary type and secondary type. Primary type, in which heart muscle disease predominantly involving the myocardia and or of unknown cause. So where the cause is not known. And secondary type associated with a systemic disease, myocardial disease of a known cause or associated ischemic systemic disease. So primary, you have got idiopathic, then you have certain cardiomyopathies that run in families like HOCM, eosinophilic endomyocardial disease, rare but still present, endomyocardial fibrosis, rare but still present. Now secondary myocardial involvements, they come as infected cause, like you can have viral myocarditis, bacterial myocarditis, you can have fungi, protozoals, pyroketals. Then you have got metabolics like glycogen storage disease, hemochromatosis, a rare but treatable disorder. You should never forget hemochromatosis. Then February disease, and then there are deficiencies like electrolyte imbalances and nutritional deficiencies. Then you have got connective tissue disorders like systemic lupus erythematosus, polyarthritis nodosa, rheumatoid disease, progressive systemic sclerosis, dermatomyositis. And then you have got infiltration and granulomas, sarcoidosis, amyloidosis, malignancies. You can have neuromuscular causes, then you have sensitivity and toxic reactions like alcohol, it can cause cardiomyopathy, and then you have got peripartum cardiomyopathies. Clinical classification, depending upon how the patient presents to you, either it's a dilated form or a restrictive form, and hypertrophy. So let's take a scenario first. Look at this scenario and come up with a diagnosis. 32-year-old woman presented with a 1-week history of increasing dyspnea, orthopnea, and PND. She had given birth to a baby 2 weeks back. She is primigravida. The blood pressure throughout the pregnancy was normal. The patient had noticed an increasing dyspnea and swollen ankles just prior to delivery but attributed this to her advanced pregnant state. There was no family history of any cardiac disease.
On examination, the pulse was 120 per minute and regular. The temperature was 37.2 degrees centigrade. The blood pressure measured 100 by 60 mm of mercury. The JVP was raised. Palpation of the precordium revealed a displaced and prominent apex. On auscultation, both heart sounds were normal. In addition, there was a systolic murmur of mitral regurgitation and a third heart sound. Auscultation of the lungs revealed inspiratory crackles at both paces. Echocardiogram shows dilated left ventricle with globally impaired systolic function, ejection fraction 35%, mitral regurgitation, no obvious vegetations on the valves. ECG shows sinus tachycardia along with non-specific STT changes. Blood cultures are awaited. So, what is your diagnosis? Dear students, the diagnosis in this case is congestive cardiac failure due to dilated cardiomyopathy, which is of peripartum variety. So, peripartum cardiomyopathy leading to congestive cardiac failure. So, here you can see a young woman. There is a very decreased chance of ischemic heart disease at this age, and there is 1 week history of increasing dyspnea and orthopnea. And she has got a history of birth to a baby 2 weeks back. So she's in peripartum period, and she's primigravida. Remember, primigravida increases the chance of peripartum cardiomyopathy, and the patient is increasing progressive breathlessness. And here you can see a raised JVP, which means its right heart is also going to be involved, and a displaced and prominent apex beat, which means the heart is dilated. The left ventricular chamber is dilated, and you can see there are mitral regurgitation. Mitral regurgitation is because of the dilatation of the left side of the heart, and a third heart sound indicates a left ventricular failure. And these bibasal inspiratory crackles are because of the pulmonary edema. Okay, echocardiogram is showing a dilated left ventricle with globally impaired systolic function. Now remember, in dilated cardiomyopathy, there is always a global dilatation of the heart and there is a global hypokinesia. In in a heart dilated because of ischemic damage, there is focal dilatation of the heart, like left ventricular dilatation, and there are systolic wall motion abnormalities. So this is how you differentiate dilated cardiomyopathy from ischemic cardiac damage on echocardiogram. So ejection fraction is decreased. There are mitral regurgitation murmurs, and ECG is also showing change. So these are our scenario details, and this is how we are going to interpret this scenario. So left ventricle and our right ventricular systolic function is impaired, leading to progressive cardiac dilatation, and the resultant effect is a heart failure, a congestive cardiac failure. So these are the causes of dilated cardiomyopathy. Have a few seconds to read these. Genetics, alcohol, peripartum cardiomyopathy. Now remember, this peripartum cardiomyopathy can present during the last trimester of pregnancy or after within 6 months of delivery. And I always advise contraception to these patients if because the chances of peripartum cardiomyopathy in the subsequent pregnancies are very high. Myopathies, neuromuscular diseases can also present with dilated cardiomyopathy. These are other cardiovascular diseases, infections, metabolic causes, especially the endocrine ones. Look at these endocrine abnormalities, the long list of endocrine abnormalities resulting in dilated cardiomyopathy. Electrolyte imbalances like potassium, phosphate, and magnesium. Nutritional. These nutritional deficiencies can present with dilated cardiomyopathy. These are the toxins, drugs, and I want to mention these chemotherapeutic drugs like doxorubicin and daunorubicin, and granulomatous diseases and neuromuscular disorders. A long list of neuromuscular disorders can present. These connective tissue disorders, RA, SLE, and others. Infiltrative diseases like hemochromatosis, amyloidosis, glycogen storage diseases. These physical agents, primary cardiac tumor, senile, and some immunologic causes.
So remember these causes because one of these causes is going to appear in your scenario of dilated cardiomyopathy. So the patient can present with symptoms of left and right-sided heart failure, and there can be a vague chest pain. Syncope due to arrhythmias can occur. Uh, the apex beat will be shifted because of the cardiac enlargement. You will find ankle edema, you can find sacral edema, you can find a raised jugular venous pressure because of the right-sided heart failure. You can find a third heart sound, and you can find bibasal inspiratory fine crackles. Pulse pressure is narrow, jugular venous pressure is elevated in congestive cardiac failure. If um, and there can be third or fourth heart sounds. And when the cardiac muscle is dilating, um, it is going to increase the distance between the valves like mitral valve and tricuspid valve, and regurgitant murmurs can be there. So look at this chest X-ray. You can see the picture-shaped heart, घड़ा बना हुआ है पूरे heart का. So this is how a dilated cardiomyopathy looks on a chest X-ray. ECG, these changes, though non-specific, but it can be there on an ECG. Sinus tachycardia, atrial fibrillation, ventricular arrhythmias, left atrial abnormalities, low voltage ECG, SDT changes, and conduction defects. Echocardiography, you can see a dilated heart on echocardiogram. Global hypokinesia is there. CT and MRI can give us structural details of the heart, and ejection fraction is always going to be decreased. So it's a progressive disease. There's a downhill course. Sudden cardiac death is a constant threat. ऐसे लोग अक्सर रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो सुबह उठना नसीब नहीं होता, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द arrhythmias. सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन, जब भी कार्डियक मसल डायलेट करता है बच्चों तो स्टेग्नेशन ऑफ द ब्लड इन हार्ट होती है. उस स्टेग्नेशन इफेक्ट की वजह से ये थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और क्या होता है जब भी थ्रोम्बस बनता है, इट कैन एम्बोलाइज टू द ब्रेन कॉजिंग स्ट्रोक. इट कैन कम एम्बोलाइज टू वन ऑफ द लिम्ब आर्टरीज लाइक लोअर लिम्ब मोस्ट कॉमनली. उसकी वजह से गैंग्रीन हो सकता है. सो ऐसे पेशेंट्स को सारी जिंदगी के लिए क्रॉनिक एंटीकोगुलेशन चाहिए. ट्रीट कैसे करते हैं? हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट दें, डायूरेटिक्स देंगे, डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज. So these are the drugs that are indicated in heart failure. कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी हार्ट फेलियर की एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट है. अरिथमियाज के चांसेस ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर ऐसे पेशेंट्स को लगाए जाते हैं. अगर किसी को एक हार्ट थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया चल पड़ता है तो उसको आपको लगाना पड़ता है. किसी को ट्राइफेशिकुलर ब्लॉक आ जाए तो उसको भी लगाना पड़ जाता है. And ultimately, when the disease is very advanced and refractory to other therapies, cardiac transplantation should be given. ऐसे पेशेंट को मना करें वो अल्कोहल ना यूज करे. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या होता है? नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, तो वो ऐसे पेशेंट्स को नहीं देते. पहले ही सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और भी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन करते हैं. एनसेड्स नहीं देनी, स्टेरॉइड्स नहीं देनी. क्या करते हैं ये? वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन करते हैं, उसकी वजह से हार्ट फेलियर वर्स होता है. एंटी अरिथमिक ड्रग्स की जगह आईसीडी प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है. So take another scenario. 24-year-old Pakistani athlete was referred to the cardiologist after experiencing 2 episodes of dizziness while playing in one week. During the last episode, he almost lost consciousness. There were no other associated symptoms. He had similar dizzy episodes 1 month back. There was no history of headaches. He had no past medical history of significance. His father died at the age of only 27, but the patient was not sure about the cause of death. So, on examination, he appeared well, heart rate 68, blood pressure 130/60, JVP is not raised. There's a double apical impulse on precardium, loud pansystolic murmur in the mitral area, and ejection systolic murmur at the left lower sternal edge. Chest is clear.
My peripheral pulses are normal, neurological examination is normal. So, what is the diagnosis? Take some time, make up your mind, and commit your diagnosis. So, the diagnosis here is hypertrophic obstructive cardiomyopathy. देखें, ये बंदा एथलीट है, ठीक है, और इसके फादर के अंदर आपको सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री मिल रही है। तो अगर यंग बंदा हो और उसको सिनकपी की एपिसोड्स हो रही हो, तो उसकी फैमिली के अंदर भी एक सडन कार्डियक डेथ, उसके फादर की बड़ी यंग एज के अंदर एक सडन कार्डियक डेथ हो गई, जिसका जिसकी कॉज नहीं पता चल सकी, मोस्ट प्रोबेबली सडन कार्डियक डेथ थी। अब अगर आगे आप इसको देखें तो आपको डबल एपिकल इम्पल्स मिल रही है और हार्ट के अंदर एक आपको माइट्रल रिकर्जिटेशन का मरमर मिल रहा है और एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन का मरमर मिल रहा है। तो ये तीन फाइंडिंग्स ऐसी हैं जो कि आपको हुक्म की तरफ गाइड करती हैं। So, hypertrophic obstructive cardiomyopathy characterized by left ventricular hypertrophy, typically of a non-dilated chamber without obvious cause, such as hypertension or aortic stenosis. There are two very prominent features of this disease. One is asymmetrical left ventricular hypertrophy. मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ना, उसमें जो सेप्टम है वो ज्यादा बड़ा होगा और उसकी वॉल उससे कम बड़ी होगी। The second thing is dynamic left ventricular outflow tract pressure gradient. मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक जो है वो इतना, वहां पर कार्डियक मसल इतना मोटा हो गया है कि वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये डायनामिक होती है। कुछ कॉजेज ऐसी होती हैं जो कि इस आउटफ्लो ट्रैक के अक्रॉस प्रेशर ग्रेडियंट को बढ़ा देती हैं, कुछ जो होती हैं वो उसको कम कर देती हैं। तो ये एक डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और इसी वजह से इन पेशेंट्स के अंदर सिनकपी की एपिसोड्स आती हैं कि जैसे ये प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है वैसे ही कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, और पेशेंट को एक डिजीनेस की, एक सिनकपी की एपिसोड आ जाती है। So here you can see the septum is more enlarged, more hypertrophied than the left ventricular wall. And this is the left ventricular outflow tract. And here you can see the muscle is much larger here. Okay, so that's why there is a left ventricular outflow tract obstruction. So this is a schematic representation of the left ventricular hypertrophy. सो मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली हिस्ट्री इन लोगों के अंदर पॉजिटिव होती है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रांसमिशन है। मायोसिन हैवी चेन जीन ऑन क्रोमोसोम 14 is usually involved. There are so many other mutations. Please read in your book what kind of mutations are there. So this is one of the most common one. और आपको अगर किसी को हुक्म निकल आए, आपको उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को स्क्रीन करना होता है। ठीक है, 20 साल की 12 साल की उम्र के बाद एकोकार्डियोग्राफी से किया जा सकता है, उससे पहले आप जेनेटिक टेस्टिंग से करते हैं। हुक्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन यंग कंपैरेटिव एथलीट्स। सबसे कॉमन सिम्टम डिस्निया होता है, और दूसरे सिम्टम सिनकपी, एंजाइना पेक्टोरस एंड फटीग आर देयर। फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको डबल और ट्रिपिकल एपिकल इम्पल्स मिल सकती है। फोर्थ हार्ट साउंड इज वेरी कॉमन। फोर्थ हार्ट साउंड होता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से। और हुक्म के अंदर क्या हो रहा है कि देयर इज अ हाइपरट्रॉफीड लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की कंप्लायंस बहुत कम हो जाती है, उसकी जब उसके अंदर ब्लड आता है तो फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। रैपिडली राइजिंग पल्स इज अ फीचर, एंड देयर इज माइट्रल रिकर्जिटेशन की वजह से एक मरमर आता है, और एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मरमर आता है। माइट्रल रिकर्जिटेशन की वजह से लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर एक लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर लेफ्ट आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मरमर आएगा, और एपेक्स के ऊपर हॉलो सिस्टोलिक मरमर ऑफ माइट्रल रिकर्जिटेशन आएगा। सो दीज आर टू मरमर्स दैट आर यूजुअली देयर। ईसीजी के ऊपर आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, अरिथमियाज मिल सकते हैं, ब्रॉड क्यू वेव्स रिफ्लेक्टिंग स्फेयर रिसेप्टर हाइपरट्रॉफी आर देयर। सो दिस इज एन ईसीजी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बहुत सारी चेंजेस हैं इसके ऊपर। लेट्स कीप डिस्कशन फॉर अनदर टाइम। जब आप ईसीजी पढ़ेंगे तो उस वक्त हम आपको बताएंगे।
Chest X-ray can be normal. Echocardiography is the mainstay of diagnosis. सेप्टम आपको नजर आ जाएगा कि वो बाकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल की निस्बत से बहुत मोटा है. So here you can see left ventricular hypertrophy often with the septum 1.3 times the thickness of the posterior left ventricular free wall. Okay, ground glass appearance इसकी मिल सकती है. SAM, here SAM is systolic anterior motion of the mitral leaflet. जब भी सिस्टली होगी तो माइट्रल लीफलेट, जो अंटीरियर माइट्रल लीफलेट है, उसका एक सिस्टोलिक मोशन आएगा, एक पैराडॉक्सिकल मोशन आएगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रेशर ग्रेडियंट्स अक्रॉस दिस वाल्व ड्यूरिंग सिस्टली. ऐसे पेशेंट को आपने एडवाइस क्या करना है? कंपेटिटिव स्पोर्ट्स छोड़ दे, उसको फुटबॉल, हॉकी, ये सारी जो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स हैं अवॉइड करने का कहें. डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, उससे कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कम होगा सॉरी, और उसकी वजह से सिनकपी होने का अंदेशा है. बीटा ब्लॉकर्स अमेलियोरेट एंजाइना पैक्ट्रस एंड सिनकपी, तो बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं. अरिथमियास के लिए मायोड्रॉन दे दें. नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या करते हैं? ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी कम होती है और उसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं. ये बच्चों कुछ अद्वियात हैं जो आपने याद रखनी है: डिजिटालिस, डायूरेटिक्स, नाइट्रेट्स, डाइहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेजोडायलेटर्स एंड एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट्स. इनके नाम याद करने बहुत कॉमन हैं, ये एमसीक्यूज में आती हैं, और इनमें से कोई एक आध पूछी जाएगी आपसे कि हुक्म के अंदर कौन सी ड्रग्स नहीं देनी. अल्कोहल इंजेक्शन आप इसको अवॉइड करें, उससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती है और वो सिम्टम प्रोड्यूस करती है. और they can you can give adrenergic beta blockers or ablation of the atrioventricular node and insertion of a pacemaker. These are all strategies to deal with rhythm abnormalities. समटाइम सर्जरी करके हम वेंट्रिकल की वॉल को काट सकते हैं, सेप्टम को काट सकते हैं, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाए. समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इस जगह पे अल्कोहल इंजेक्ट कर देते हैं, उससे भी सेप्टल हाइपरट्रॉफी कम हो जाती है. किसी को फेटल एरिथमियाज हो रहे हैं तो उसकी इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर लगा सकते हैं इसको. एंड द अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज व्हेन एवरीथिंग is refractory to treatment, cardiac transplantation is the option. So here take the last scenario: 34-year-old female presented with a 3-month history of increasing ankle edema and abdominal distension. Now look from where the disease is starting: ankle edema and abdominal distension. There was no history of cough or orthopnea. ठीक है, orthopnea मतलब सांस इतना नहीं चढ़ रहा पेशेंट को. She was married with a 5-year-old daughter. On examination, there was no evidence of pallor, jaundice, or lymphadenopathy. She had considerable pitting lower limb edema. The heart rate was 100 and pulse was irregular. The blood pressure was 95/75. The JVP was elevated to the level of the earlobes. Now, JVP पे भी देखें कि JVP is so much raised in this case. On examination of the precordium, the apex beat was not palpable. The heart sounds were soft. There was no cardiac murmurs. Auscultation of the lung fields are normal. Abdominal examination revealed firm hepatomegaly, palpable 6 cm below the costal margin and shifting dullness. मतलब उसको ascites भी है, उसका liver भी काफी सारा enlarge है, spleen को नहीं enlarge. Neurological examination and examination of the skin were normal. तो अगर हम इस स्नेरियो को दोबारा देखें, यंग फीमेल है और उसके अचानक से पाँव सूजने शुरू हो गया, उसका पेट सूजना शुरू हो गया, उसको सांस की तकलीफ कोई नहीं हुई. ठीक है, एक आपको पिटिंग एडीमा भी मिल रहा है, इरेगुलर पल्स मिल रही है, एंड अ डिस्प्रोपोर्शनेटली रेज्ड जेवीपी इज देयर. दूसरा आपको क्या मिल रहा है? आपको असाइटिस मिल रही है और आपको हेपेटोमेगली मिल रही है. यूजुअली देयर इज टेंडर हेपेटोमेगली इन दीज केसेस. स्प्लीन कोई नहीं लार्ज मिल रही. अब ये देखें कि this scenario is of restrictive cardiomyopathy. ठीक है, restrictive cardiomyopathy में क्या होगा कि heart muscle is not able to accommodate the blood, जिसकी वजह से heart chambers के अंदर बैक प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है.
जब ये बैक प्रेशर ज्यादा होता है तो वो लिवर की तरफ आता है, इंफीरियर वेना केवा के जरिए लिवर तक आता है। लिवर के अंदर जब ब्लड की पुलिंग होगी, लिवर कंजेस्टेड हो जाएगा। लिवर की कंजेशन की वजह से हिपैटोमेगली होगी, उस टेंडर होगा लिवर, और लिवर एनलार्ज्ड हो जाएगा। और उसकी वजह से जब बैक प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट को असाइटिस भी होगी। बैक प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट को एंकल एडीमा भी होगा। और ये एंकल एडीमा और ये असाइटिस और हेपेटोमेगली विल बी डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर देन द डिस्निया। डिस्निया इतना प्रोमिनेंट फीचर नहीं होगा जितना स्वेलिंग प्रोमिनेंट फीचर होगा। और जेवीपी इज इनवेरिएबली रेज्ड। और ये देखें कि कान की लोब तक, कान की लोब, ईयर लोब्यूल तक जेवीपी चढ़ा हुआ है इस पेशेंट का। So this is how these cases are going to present. The hallmark of the restrictive cardiomyopathy is abnormal diastolic dysfunction. Heart relax नहीं कर सकता. The ventricular walls are excessively rigid and impede ventricular filling. So these are the causes. Please have a few seconds to read these causes and remember them. Patient will be exercise intolerant. Dyspnea can be present. Edema, ascites, enlarged tender and pulsatile liver can be there. Jugular venous pressure is raised. अक्सर जो नॉर्मल लोग होते हैं जब वो इंस्पायर करते हैं तो उनका जेवीपी फॉल करता है। जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाला पेशेंट होगा उसको फॉल नहीं करेगा, उसका राइज कर जाएगा। इसको कुछ स्मॉल साइंस बोलते हैं। हार्ट साउंड्स में भी डिस्टेंट सॉफ्ट होंगी। थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड्स आर कॉमन। एपेक्स बी impulse is usually easily palpable and mitral regurgitation is more common. ईसीजी पे नॉन स्पेसिफिक चेंजेस होती हैं। अच्छा, इस ऐसे पेशेंट्स का एक्सरे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी शो यू एन एक्सरे। बच्चों ये देखो, ये आपको एक लेटरल व्यू ऑफ द चेस्ट एक्सरे मिल रहा है, ठीक है। और ये आपको हार्ट का शेडो नजर आ रहा है। अगर आप इस मेरे पॉइंटर की तरफ देखें तो ये आपको एक कैल्सिफाइड लेयर नजर आ रही है। ये जो कैल्सिफाइड लेयर है ये असल में कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम। कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम is present in constrictive pericarditis. It is not present in restrictive cardiomyopathy. और ये इन दोनों कंडीशंस को डिफरेंशिएट करने का एक बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, बिकॉज दीज टू कंडीशंस आर गोइंग टू प्रेजेंट विद अ वेरी सिमिलर क्लिनिकल पिक्चर। आप क्लिनिकल पिक्चर की मदद से इसको बहुत मुश्किल से डायग्नोज करते हैं। तो these investigations are going to help and this is one of the very cost effective तो अगर आपको पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन मिल जाए, डायग्नोसिस इज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। एकोकार्डियोग्राफी पे आपको मिल जाता है। सीटी कार्डिक एमआरआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी में हेल्प टू शो यू द डायस्टोलिक डिसफंक्शन। मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। अगर आपको कोई सेकेंडरी कॉज मिल जाए जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस है, तो आप उस कॉज को ट्रीट करें तो पेशेंट को बेहतरी आएगी। अदरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। क्रॉनिक एंटीकोगुलेशन, अगर किसी को एम्बुलाइजेशन का फिनोमेना हो रहा है तो आपको देनी पड़ेगी। अगर किसी को अरिथमियाज हो रहे हैं उसके अरिथमियाज को ट्रीट करें। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को कंस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी से पेरिकार्डाइटिस से फर्क करना बहुत जरूरी है, बिकॉज in constrictive pericarditis, you just remove the pericardium and the disease is curable. While restrictive cardiomyopathy has a very poor prognosis, and ultimately you have to resort to cardiac transplantation. So this is the end of our lecture. Thank you so much.